Students, I am Mrs. Mona Jajora and today I am going to teach you chapter 3 Agriculture in India. So let's begin. Content. First, introduction. Second, importance of agriculture. Third, crops in India, food crops and cash crops. Fourth, livestock, and fifth, fishing. Firstly, we see new words in this chapter. Crops. Cultivated plants or agriculture produce such as grains, vegetables or fruits. Livestock rearing. Livestock is commonly defined as domesticated animals raised in an agriculture setting to produce such as meat, eggs, milk, fur, leather and wool. Agriculture. Agriculture is the science or practice of farming which involves preparing and maintaining soil for growing useful plants or crops. Next, introduction. You already know that the food grains we eat come from the fields. Most food grains are grown in fields and are known as crops. The practice of farming and the cultivation of land to grow crops is called agriculture. Apart from farming, agriculture includes other activities like dairy farming, livestock rearing, fishing and horticulture. India is primarily an agriculture country. About 70% of India's population depends on agriculture. Agriculture includes farming, horticulture, livestock rearing, fishing and forestry. Horticulture means cultivation of fruits and vegetables and raising domestic animals. Importance of agriculture. हाँ, क्या एग्रीकल्चर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट एज इट प्रोड्यूस फूड फॉर पीपल एंड एनिमल्स. Dairy farming and rearing of livestock provides milk, food and fibers like wool and silk. Many industries like the canned food industries, textile industries and leather industry depend on agriculture for raw materials. Raw materials के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? ये जितने भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ के जो पीपल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? रॉ मटेरियल्स पे. और वो रॉ मटेरियल्स हमको कहाँ से मिलता है? ये सिल्क और वूल ये सब हम लोग मिलता है लाइवस्टॉक के रियरिंग के थ्रू. फार्मर्स इन इंडिया ग्रो मेनी क्रॉप्स. दिस क्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कितने में डिवाइड किया गया है क्रॉप्स को? टू टाइप में. ओके. फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स राइस, व्हीट, मैज, मिलेट्स एंड पल्सेस. ठीक है. एंड कैश क्रॉप शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड, टी एंड कॉफी एंड कोकोनट. फर्स्टली वी सी फूड क्रॉप. फूड क्रॉप्स. The crops grown to feed people are called food crops. Rice, wheat, millets and different type of pulses are food crops. Rice is most important food crop. India is world's second largest producer of rice after China. सबसे पहले नंबर पे चाइना है एंड देन उसके बाद में इंडिया. India is famous for its more than 4,000 varieties of rice. How many varieties? 4,000. Rice requires a hot and wet climate to grow. West Bengal, Assam, Jharkhand, Bihar, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala are the rice producing state of India. Clear? Second, wheat. Wheat is a staple food crop of north and northwestern part of India. It grows in cool and moist climate. Wheat mainly grow in Punjab, UP, Haryana, Madhya Pradesh and Maharashtra. You can see here this area. This area, this state is produce wheat. Okay. Wheat means गेहूं. Pulses. Pulses means dal. Okay. Pulses include lentils, dal such as moong, arhar, urad, masoor and gram. Pulses are very rich in proteins. They are grown in different parts of the country. India is the world's largest producer and consumer of pulses. Millets.
Millets were the first crop to the cultivated by early settlers. Millets like jowar, bajra and ragi. They are grown in areas with scanty rainfall. India is largest producer of millets. It produced in Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, Madhya Pradesh and Telangana. Cash crops. The crops grown as raw materials for industries and sold for money are known as cash crops. कैश क्रॉप्स में क्या होता है, जो किसान है वो डायरेक्टली जाके सेल करते हैं और उनको हाथों हाथ क्या होता है, पैसा मिल जाता है, उसके लिए उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता. कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड, रबर, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड कोकोनट, दिस आर कैश क्रॉप्स. ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स है. ओके, फर्स्ट कैश क्रॉप्स कॉटन. कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप. इट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटो. Cotton is grown in Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Punjab. Cotton is used to making clothes और fabric. कॉटन का यूज़ किस किस के लिए होता है, ये क्लोथ्स बनाने के लिए और फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. जूट इज ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप. इट ग्रोन वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. जूट इज यूज टू मेक बैग्स, कारपेट्स एंड ropes. Jute was once called golden fiber of India. Sugarcane. India is the leading producer of sugarcane in the world. लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, शुगर केन के लिए इंडिया. ठीक है. इट इज यूज टू प्रोड्यूस शुगर एंड गुड़ और जागरी. यूपी इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. इट इज ऑल्सो ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ऑयल सीड्स. ऑयल सीड मीन्स तिलहन. ठीक है. ऑयल सीड प्रोवाइड ऑयल फॉर कुकिंग फूड. दिस ऑयल इज called vegetables oil. Groundnut, linseed, coconut and mustard are grown in variation part of India. Mustard oil is produced in Punjab and Haryana. Groundnut is grown in Gujarat and Maharashtra. Tea and coffee. Tea is called the queen of beverage. It grown well in hot and wet climate. Tea mainly grown in Assam, West Bengal, in Darjeeling Hills and Tamil Nadu in Nilgiri Hills. Coffee is grown in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. You can see here this area is produce coffee and tea. Now spices. Spices these are widely grown in Malabar coastal plains or Kerala and Karnataka. Spices are a major cash crops for many states of India. This includes pepper, cinnamon, clove, ginger, cardamom, chilies and turmeric. Each spices requires different climatic condition, but generally a warm and humid climate is required to grow most spices. Clear? Rubber is an important cash crop which grows well in a wet and hot climate. Rubber plantations are found in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. Latex is collected from the rubber tree and sent to factories to make rubber. रबर प्लांट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें भी बनती है, जैसे टायर है, देन उसके बाद में बैग्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें. ठीक है. हाँ. लाइव स्टॉक. एनिमल्स दैट पीपल कीप इन देयर हाउस और ऑन farms are called livestock. They include cows, goats, buffaloes, bullocks, camels, sheep, horses and donkey. Animals such as cow and buffaloes give us milk. Milk is used to make many things like paneer, cheese, butter and ghee. ये सब किसके थ्रू होता है, ये पशुपालन वगैरह सब किस में आता है, लाइव स्टॉक में आता है. ठीक है. हाँ. इन द डेजर्ट people use camels for transport. In the forest, elephants used to carry heavy logs. In the hilly areas, mules and yaks are used as means as transport. Now fishing.
फिशिंग इज़ वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। समुद्र के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए, ठीक है। क्या है ऑक्यूपेशन? फिशिंग। पीपल इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला सप्लाई फिश टू द इंटायर कंट्री। पूरी कंट्री में जो है सप्लाई करते हैं फिश को। कौन से स्टेट है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, ये सब स्टेट, ठीक है। Fish is another rich source of protein. The cultivation of fish is big tank is called as pisciculture. The government has started a program called the Silver Revolution to increase production of fish. Remember, कुछ पॉइंट्स है इसमें जो आपको याद रखना ज़रूरी है। Agriculture is the practice of farming and the cultivation of land for growing crops. Second, there are two types of crops grown in India, cash crops and food crops. Food crops are grown to feed the people of India. Cash crops are grown to provide raw materials to industries and factories for commercial use. Now children, here this chapter is end. Do your study. We'll meet in the next class. Take care.